So, dear students, in last class we have discussed about how to open your file, what are the opening modes, and how to read a file, how to open a file in read mode, how to open a file in binary mode, how to open a file in append mode, etc. etc. And in this class we will able to understand that how to write a file. अपनी फाइल में हम लोग राइट किस तरह से करेंगे. सो राइटिंग फाइल. राइटिंग टू अ फाइल. To write a file, again we call a built-in function which is known as write. So a built-in function write is used. What is the syntax of this write function? First of all, open your file in the desired mode. Desired mode, and then secondly write the required contents or whatever contents do you want to write in the file. Fine. So for example, open a file. Suppose my file name is example.txt and my file handle is my file. So first of all, open a file in the desired mode. What will be the desired mode? Desired mode will be the write mode. So my file is equal to open example.txt and r is the desired mode. Now in the next line, write whatever contents do you want to write in your file. So to write the contents, now this statement, if file already does not exist in your secondary storage media, then this statement will write the file, also also create that file. मतलब this open function, if example.txt does not exist in your secondary storage media, means hard disk, then open member function will create a file with the name example.txt and then it will write the desired content also in your file. So here we use the write method. So my file dot write. Now here write the contents which
you want to write in file. Suppose my file dot write here. This is a line \n. This is another line \n, writing this to a file. Now we have written 3 lines in our file example.txt. So now we close the program, save. This is the step number 3. Save and close the program. Before saving and closing the program, you must close your file. So here we write another statement, my file dot close. Now save and exit from that Python window, and then choose the directory, means c:\user जहाँ पर भी है, या C पर अगर है, केवल C पर है, देन C पाइथन, जिस नाम से भी पाइथन की फाइल फोल्डर बना हुआ है आपका, जैसे कि मेरे सिस्टम में पाइथन 3.1 के नाम से बना है, तो C पाइथन 3.1 and then here you can see your file. Open the file named example.txt text, and now you can see the contents in 3 lines. This is a line, this is another line, and writing this to a file. When you open your file, then these contents will be shown in the example.txt in 3 consecutive lines. So you can open it by using the mouse also. So to open in the Windows environment, to open with the mouse, then you have to double click on the C drive and then double click on the Python 3.1 and then you can see that file example.txt in this particular subfolder. यहाँ से example.txt, this folder ये है. So from here you can open your file and you can also see the contents which is written by you with the help of this Python program. Suppose we open a window. First of all, we open the Python shell. Python shell will be opened, and click on the file menu and choose the new window. After choosing the new window, you have typed your program like this, and then save and close that window. Then after, without exiting the Python, if your file, but condition is here, if your file is already saved in that specific Python folder, then you need not to exit from the
Python. Here you can simply use the file menu and use the open command, and here you can browse your file and click on the open button, then the file will be opened. So by this you can write any specific contents in your file. Now in the next next we take a example which is which demonstrate us how to write a file and how to write the how to read the written contents, how to read the typed contents in a file through your Python program. So now we are taking an example related with output operation in a file. So here the question is, write a function in Python to write some contents and read them. So here is the solution. Here we can write a comment: basic input output operation on a file. Now give the definition. So def, suppose the function name is read write, so read underscore read write, and here we can give the file name as an argument in the function. Suppose we assume that file name is fname. Yes. Now enter the body of the function. Then here you can open my file is equal to open file name fname comma, in which mode we have to open a file? Write mode. So here we write the W. Yes. So in the next line we have to write the contents in our file. So my file dot write a quick brown fox jumps over the lazy dog. Full stop. Now backslash n, again a new line writing this content into the file. Now close the bracket. So this is the matter we have written in our file. Now remember one thing, that at one time
you can only open a file in one mode, either in read mode if you are going to perform the read operation, or in the write mode if you are going to perform the write operation. Both read and write operation cannot be performed simultaneously in a single file. So here we are going to close our file. So my file dot close. Now again we open our file. So my file dot my file is equal to open fname comma r. Now this mode is the default mode, that is, you if you want then you can write this mode specifically, and if you don't want to write this mode, then you need not to write this r in the opening mode, because r reading mode is the default mode. अगर आप इसका नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी ये फाइल आपकी रीड मोड में ही ओपन होनी है, और कर देंगे तो रीड मोड में तो ओपन होगी. नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर फाइल. सो here my file dot read, then again close the file. My file dot close. So this is the definition of the function. Now we have to write the driver program, main program, from where the code will be executed through the compiler or through the interpreter. So in this indent we have to write the driver program. So in driver program, suppose str is equal to my, give the name of the function, read underscore write, and in parenthesis you have to give the name of the file, not f name. So here we are going to give the name of our file, example dot text. Yes, so this program will be executed with no error but no output. Why? Because print statement is missing. So again here we can write print str. Now at this point program is completed. Now in the next step, save and then run. So as soon as you click on the run module or you press the F5 key to execute this program, these contents will be written in your file, and after that, as soon as you use this statement, read statement, again these contents will be retrieved from the file to your monitor. पहले ये कंटेंट्स फाइल में राइट किए जाएंगे, इसके बाद फाइल क्लोज हो जाएगी, फिर से फाइल ओपन करके आप जैसे कि इसके थ्रू आप जब फाइल को रीड कर रहे हैं, ऐसे केस में ये फंक्शन के थ्रू, ये स्टेटमेंट के थ्रू, ये जो रिटन मैटर है फाइल के अंदर वो आपका रिट्रीव हो जाएगा मॉनिटर के ऊपर. तो इस तरह से आप रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन दोनों ही एक फाइल पे परफॉर्म कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखना है कि एक ही बार में आपको नहीं करना है. पहले राइट ऑपरेशन परफॉर्म करिए और रीड ऑपरेशन परफॉर्म करिए. यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स हम समझा रहे हैं वो सभी के सभी example.txt पर हम समझा रहे हैं. आप चाहें तो you can use further name for your file. If example.txt is already exist in your hard disk, then you can use another name, example
one dot text or example 2 dot text or example 3 dot text, etc., etc. You can use another name for file as well as for function as well as for file handle. So this is a typical example for the basic input output operations on a text file. Now take another example, that another question. Write a program in Python to create a file and holds some data in separate lines. So here is the solution. So here we can write a comment, or we do not write a comment because the question is already written, what to do in our question, what to do in our solution. So first of all, the file will be opened in the desired mode. What is the desired mode? What operation is to be performed on file? Write operation. So the desired mode is write. So open a file. My file is equal to open example.txt and write. Now for example, we generate a loop that for I in range 5, I in range 5, and here we use a input statement that name is equal to input, give the message, enter your name. Now my file dot write and name. ये जो नेम हमने यहाँ पे माना है, इसको यहाँ पे मैंने पास करा दिया राइट फंक्शन के अंदर. नाउ माई फाइल, अब ये राइट हो जाएगा मैटर. अब इसके बाद में माई फाइल पेन माई फाइल डॉट write and here backslash. This statement is used for a purpose. The purpose is that you have to enter the 5 names in 5 separate lines, because this statement will transfer the control of the program after one name to the new line. तो ये स्टेटमेंट जो है वो कर्सर को न्यू लाइन पर ट्रांसफ़र कर देगा जैसे ही आप एक नेम एंटर करेंगे. सो नाउ वी कैन क्लोज आवर फाइल. सो माई फाइल डॉट क्लोज. Now the program is completed. Save your program and then
execute your program. As you type the enter key, जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे या फिर आप जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को, तो क्या लिख करके आएगा, एंटर योर नेम। आउटपुट में लिख करके आएगा कि एंटर योर नेम, ऐसे लिख करके आएगा। और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा। आपने मान लीजिए पहला नाम दिया ABC, आपने फर्स्ट नेम दिया ABC, और जैसे ही आपने एंटर किया फिर से यही स्टेटमेंट लिख करके आएगा, एंटर योर नेम, योर नेम। अब की बार आपने दिया PQR, फिर से आपने एंटर किया, फिर से लिख करके आएगा, एंटर योर नेम। अब की बार आपने दिया YNK, फिर से लिख करके आएगा, एंटर योर नेम। अब की बार आपने दिया XYZ, और फिर से लास्ट टाइम लिख करके आएगा कि एंटर योर नेम। और अब की बार आपने दिया YNK दे चुके हैं, CDE मान लीजिए दे दिया आपकी बार आपने। और इस तरह से 5 नाम आपने एंटर करवा दिया। अब ये नेम जो है वो फाइल के अंदर राइट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसको आप इस विंडो को क्लोज़ कर दिए। रन कराने के बाद इसको क्लोज़ कर दीजिए, और क्लोज़ करने के बाद में फिर से ओपन कमांड चूज़ कर लीजिए। ओपन कमांड में जा करके जहाँ पर भी फाइल सेव है आपकी example.txt, ये कहाँ गई, ये example.txt जहाँ पर भी सेव है उसको आप ब्राउज़ करा लीजिए। और ब्राउज़ कराने के बाद में उसके कंटेंट्स को आप देख सकते हैं। यही कंटेंट्स उसमें लिखे हुए मिलेंगे, ABC XYZ YNK CDE, यही कंटेंट्स आपको मिलेंगे। तो ये जो प्रोग्राम हमने बताया विदाउट यूजिंग द यूज़र डिफाइंड फंक्शन बताया, इसमें हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन का यूज़ नहीं किया, मैंने डायरेक्ट हमने ड्राइवर प्रोग्राम से ही प्रोग्राम स्टार्ट किया। और जो लास्ट प्रोग्राम हमने बताया था वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू बताया था। आपके पेपर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, या फिर या कह लीजिए कि नॉर्मल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू ही आपको करना पड़ेगा। सो फंक्शन के थ्रू जब करेंगे तो हमें उसको लास्टली कॉल भी कराना पड़ेगा। तो ऐसे केस में आप नॉर्मल प्रोग्राम भी कर सकते हैं और इसी को यूज़र डिफाइंड फंक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो बाकी का नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अभी आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, सब नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा। थैंक यू सो मच।